Anupriya, I would like to ask you, like, you started your career with movies and you got to play different characters in many big budget films, as well as you worked in some really famous web shows like Sacred Games, Criminal Justice, Asur, and now, of course, Sultan of Delhi. Do you feel that somewhere the you got your dues with the web space more, in terms of exploring yourself as an actor? No, not really. I wouldn't say that. Because मेरी जर्नी बतौर मैंने फिर से चालू फिल्म्स के साथ ही किया था इन साउथ इंडियन फिल्म्स एंड Yeah, देन yeah, जासूस हैपेंड फिर मैं काफी सारे एड्स करने लग गई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट एंटायर जर्नी जब 3-4 साल मैंने कुछ 100 से ऊपर एड्स किए होंगे शायद उसी वक्त मेरे को डैडी में भी मैंने एक रोल किया छोटा एक और फिल्म एक आध और फिल्म में काम किया लेकिन जो मुझे प्रोमिनेंस मिली वो मुझे टाइगर जिंदा है और पद्मावत से मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वाईआरएफ एंड संजय सर फॉर लेइंग दैट ट्रस्ट इन मी मुझे लगता है जो आप पे सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं ना उनकी उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है ऑफ कोर्स वो सारे लोग जिन्होंने मुझे ऑडिशन किया होगा थ्रू आउट माय जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्टर वो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स या को एक्टर्स जिन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया होगा कभी भले वो एड क्रैक हुआ होगा नहीं हुआ होगा वो जर्नी अच्छी हुई होगी वो सारे मूवी ऑडिशंस जो शायद मैंने दिए होंगे जो क्रैक नहीं होंगे लेकिन बोला होगा कि आप काम अच्छा था राइट वो सब आपको लीड करता है इन योर जर्नी नथिंग इज जस्ट अबाउट इट्स नॉट जस्ट वन थिंग एवर बट अगर ड्यूज का देखा जाए तो it brought I think Padmavat and Tiger brought me on the map in a different way उसके बाद मैंने क्रिमिनल जस्टिस किया उसके बाद मैंने सेक्रेड गेम्स किया उसके बाद हुआ फिर वॉर हुई उसी के वक्त during the same time which again added another feather to my cap then ashram happened then other things happened so मुझे हर दिन लगता है कि मेरी फिल्म और ओटीटी की जर्नी काफी कोइंसाइड करी है आपस में and I've been blessed to work with some amazing directors amazing star cast and on great characters through both films and OTT world. हाँ OTT में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बात कभी कभी लग जाती है कि आज फिल्म्स में आपको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना एक लगता है कि ऐसा हो गया मिल गया ओटीटी में वो चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं लाइक मुझे सिद्धार्थ आनंद संजय सर एंड अली अब्बास के साथ काम करने का मौका लगा बट at the same point in time that just happened in OTT it's far more plausible for you to get to work with your dream directors which probably for us actors in films might not be that easy to come by sometimes it's a matter of chance in OTT you can be a little more sure of that to work with a stellar cast to work on great stories to be a primary character in the entire storytelling process वो OTT में promise ज्यादा है I think वो फिल्म में भी हो रहा है धीरे धीरे and I hope it happens to a larger degree. लेकिन हमारे segment of actors obviously they find leadish characters easily in the OTT space वो मैं बना नहीं कर सकती काम करने में दोनों ही mediums में बहुत मजा आता है and हाँ I think मेरी जर्नी के मैं कहूँगी कि मुझे अपने ड्यूज दोनों तरफ से थोड़े थोड़े मिले हैं और मेरे चैलेंजेस भी दोनों तरफ सेम ही रहे हैं right. अभी भी मुझे कभी कभी लगता है I'm still waiting for that one character which has the entire graph and where I'm running the show on my shoulders. I'm still waiting for that on an OTT front also to be very honest. So yeah, I still don't think I've found my breakthrough role in that way. Though I've been part of such important series and I've played very beautiful characters, but I'm still waiting for that one character जहाँ मैं पूरी तरह juice out हूँ. Maybe we can expect to see you in War 2 as well. I hope so. भगवान से दुआ करिए, please pray करिएगा रात को सोने से पहले. Great. Anupriya, I wanted to ask you, like, although you have played diverse characters and you have chosen diverse scripts in both movies as well as OTT, but usually
we have this perception about you and about playing really positive characters mostly. I know, I mean, we did see you in Padmavat, but mostly this impression of a very positive character about you. And we just saw the trailer and it looks really interesting about somebody who's ambitious and very strong. So, while playing such characters which require both emotional vulnerability as well as physical intimacy, while saying yes to a script, what are your parameters as an artist, which where you decide, okay, this character I need to play and I relate to it as an artist? See, मेरा बहुत टाइम से मन था डार्क कैरेक्टर्स प्ले करने का, एंड somehow I think if you manifest things, तो एक दौर था कि जब मुझे सारे रियलिस्ट बहुत ही इंटेंस बहुत राइचियस कैरेक्टर्स मिल रहे थे एक्सेप्ट फॉर पद्मावत नागमती's कैरेक्टर, एंड एक आधा whenever I did roles which were not so positive, मैंने अभय में एक एपिसोड किया था only because it was dark and I did not have to be righteous, and I did first a fantasy का एक episode because I just wanted to, in fact उसको मना करती जा रही थी, but it kept coming back to me, and somehow on a spur I said, okay fine, let's do it, let's see what happens, and I enjoyed it like no other thing I had done around that time, because हर जगह मैं बहुत सीरियस इंटेंस काम कर रही थी, उससे 3-4 चीजें चल रही थी, एंड वहां आई वाज जस्ट हैविंग फन विदाउट गोइंग इनटू अ बैगेज. तो ये डार्क कैरेक्टर्स प्ले करने का मेरा मन काफी टाइम से था, एंड लकीली लास्ट 1.5 years a lot of such things had come to me. Some I took, some I didn't, but this one I'm so glad I was a part of, because not just it's a Milan Luthria world, वो उसको बहुत ही एस्थेटिक तरीके से अप्रोच करते हैं उन्होंने. मिलन एंड सुपन बोथ, मिलन सर एंड सुपन both made me myself fall in love with Shankari, because they had so much of awe for her, and they always showered her with so much love, affection and love, and they made me look up to her in a way कि हाँ यार Shankari. And I उससे ये भी हुआ कि I was always under this pressure मैं ठीक तो करूंगी ना, whether I want to do justice to her and all of that. When आप vulnerability की बात कर रहे हैं, I think one of my first questions to Milan sir was कि I don't see any vulnerable side of her. What is her weak point? What is her vulnerability? And we did not really have an answer, because script पे वो कहीं भी एक vulnerable space पे नहीं रहती है. She's always in control most of the time for emotions. So and शुरू में I used to always try justifying her as a character and to find my internal empathy for her. But later I realized I don't need to justify her actions and her reasons for those actions. She is herself. She's passionate and ambitious, and she's mysterious, and she's always play acting, and that's okay. वही आदमी भी तो वही है हर वक्त आपके आसपास. As a woman, why do you always need to be you know emotionally correct or have a justification for being mean? And I think as a person I started imbibing that in myself too, to really accept myself as a woman far more through Shankari's character. So I'll always be indebted to her. So parameters are just working with the right kind of directors who have a right outlook towards it. जिस तरह के आपको एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आपका कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है, आप कितना कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, स्टोरी में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, how is it going to be mounted, और वो कहीं क्रास ना लगे, if it is intimacy वो कहीं क्रास ना लगे, एंड दूसरा खाली वो ही ना हो उस कैरेक्टर में, और उसके काफी सारे आपको करने के एज अदाकारा के बतौर एज एन आर्टिस्ट यू शुड हैव अदर थिंग्स टू आल्सो एक्सप्लोर while exploring the intimate part or the intimacy part of that character. Or if not, if you as an actor are very open and you reach that place in life कि जहाँ आपने सब कुछ कर लिया, आपने intimacy आपको explore करनी, तो वो अलग बात है. But मेरे लिए अभी ये important रहता है कि हाँ मैं और भी कुछ कर रही हूँ उस character के through.